हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अक्सर लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला अफजाई होती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिट 7.1 माई ट्रेवल डायरी, अ जर्नी टू द गोरख हिल्स स्टेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरी है क्या। डायरी इज बेसिकली अ बुक इन विच वन कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड जर्नल। हम अक्सर किसी डायरी पे, किसी बुक पे अपने इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरी। कुछ लोग डेली लिखते हैं, कुछ वीकली लिखते हैं। सो बेसिकली डायरी इज a record of your experiences and events. Now we will discuss pre-reading questions. Question number 1, how many of you have traveled? आप में से कितने लोगों ने traveling की है? Number 2, where have you been? Question number 3, read this quotation and state what you understand by it. The world is a book and those who do not travel read only one page. Saint Augustine. अब हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे। अब ये आंसर्स मैंने कुछ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेवल्ड? इसका आंसर मैंने लिखा है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई हैव ट्रेवल्ड मेनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू लंदन। अब देखें इसमें बिन यूज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि गोन टू और बिन टू में कौन क्या फर्क है। गोन टू का मतलब है व्हेन समवन इज करंटली एट अ प्लेस एंड दे हैव नॉट रिटर्न्ड। आप कहीं पर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका सेंटेंस बता दूं, आई हैव गॉन टू न्यूयॉर्क फॉर वर्क, आई विल बी बैक ऑन फ्राइडे। गॉन का मतलब आप गए हैं और वापस नहीं आए। और अब बिन का मैं आपको बता दूं, बिन टू मीन्स इट इज यूज व्हेन समवन हैज विजिटेड अ प्लेस एंड रिटर्न्ड। मीन्स आप कहीं विजिट करने गए हैं और आप वापस भी आ गए, तब हम यूज करते हैं बिन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टू न्यूयॉर्क मेनी टाइम्स, मैं बहुत दफा न्यूयॉर्क घूम के आया हूँ। तो इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में भी बिन इसी तरह यूज हुआ है। वेयर हैव यू बिन? आई हैव बिन टू लंदन, मैं लंदन घूम के आया हूँ। Question number 3, read this quotation and state what you understand by it. The world is a book, and those who do not travel read only one page. Saint Augustine. अब इस quotation का क्या मतलब है? Answer, this quotation is about traveling. ये जो quotation है वो traveling के बारे में है। According to the poet, one should travel the world because it is full of natural scenes, and one is here to perceive, praise एंड एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है, शायर बता रहा है कि हमें चाहिए कि हम पूरी दुनिया घूमें, विजिट करें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये जो दुनिया है वो नेचर से भरी हुई है। इट इज़ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड हम यहाँ पर इसीलिए आए ताकि हम कुछ देखें, ऑब्जर्व करें, उसकी तारीफ करें और उस नेचर को एंजॉय करें। वी शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर। वोकैबुलरी, इससे पहले कि हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन है बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो न्यू वर्ड्स थे। कुछ वर्ड्स में जो कॉमन है उनकी वर्ड मीनिंग मैंने लिखी है। नंबर 1, डायरी। अब जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, डायरी कहें या जर्नल कहें, अ बुक इन विच वन कीप्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जर्नल। हम बच्चों को कहते हैं ना कि आप डायरी एंट्री लिखें या जर्नल एंट्री। Account, it means a report or description of an event or experience. अकाउंट राइटिंग होती है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं अपने इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस। एलिवेशन मींस हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। समिट मींस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल और माउंटेन। रिजॉर्ट मींस a place frequented for holidays or recreation, वो जगह जो हम अक्सर घूमने फिरने तफरी के लिए जाते हैं। गाइड, a person who shows the way to others, especially to show tourists around places of interest. गाइड कहें या टूर गाइड जो होता है वो आपको डायरेक्शन बताता है और डिफरेंट प्लेसेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन भी देता है। Detour means a long or roundabout route that is taken to avoid something.
Next leg of my trip. इसका मतलब है a particular stage or position of a trip. Rumble, to make a continuous low sound. Revere means deep respect. Incredible means impossible to believe. Nakable yakin. Homage means special honor or respect shown publicly. इसको हम कहते हैं खराज अकीदत. Foot of the hills, the lower part of anything. Vantage means point of view or comprehensive view. Canopy means an ornamental cloth covering, hung, or held up over something. Bait Bazi, a verbal game of Urdu poetry played by composing verses of Urdu poem. Bait Bazi, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. अब बेत का मतलब है शेर, तो ये बेत बाजी है, उस जबानी मुकाबला होता है दो लोगों के दरमियान जिनको शायरी आती हो. बेत के दो मिसरे होते हैं, दूसरे मिसरे को हम मिसरे सानी भी कहते हैं. तो जो एक मेंबर होगा वो शेर पढ़ेगा, तो दूसरे मिसरे का जो आखिरी हरूफ होगा या हरूफ तहज्जी, जिसे एन गेन फे अलिफ या ये पे वो खत्म होगा, तो जो दूसरा पार्टनर होगा वो उसी हरूफ से शेर स्टार्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर स्टार्ट कर रहा है, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से. अब से जो लफ्ज है ये हरूफ पे खत्म हुआ है, तो जब दूसरा पार्टनर या जो दूसरा मेंबर होगा वो ये से दूसरा शेयर स्टार्ट करेगा. Chinese whisper, a situation in which a piece of information is passed from one person to the next and is changed slightly each time it is told. Stand still means a situation in which there is no movement or activity at all. Spellbinding, holding one's attraction completely. Tranquilize means calm. Bleating, the weak, wavering crying of a sheep. Grazing, feeding grass. Meticulous means careful. Awe-inspiring means amazing or awesome. Souvenir means a thing that is kept as a reminder of a person, place, or event. Ibn Battuta, he was a Muslim scholar and explorer. Reading text, my travel diary, journey to the Gorakh Hills Station. इससे पहले कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि गोरख हिल स्टेशन को हम द मरी ऑफ सिंध भी कहते हैं, क्योंकि ये मरी की तरह बहुत खूबसूरत है. पैराग्राफ नंबर 1. Traveling is a way of reconnecting with nature and, most importantly, with ourselves. My trip to the Gorakh Hills Station was one such experience. Knowing my love for travel, my parents broke the news 2 days before my birthday that the celebration would be held at the Gorakh Hills Station. It is situated at an elevation of 5,690 feet from the sea level, and it is the highest summit and a holiday resort in Sindh. I'm sure you will enjoy reading my travel accounts of Gorakh Hills and appreciate how awesome they are. Paragraph 1. अब पैराग्राफ 1 में जो नरेटर ने अकाउंट अपना बयान किया उसमें ये बताया गया है कि सफ़र हमें फितरत से दोबारा जोड़ने का एक तरीका है और सबसे अहम हमें अपने साथ भी. मेरा गोरख हिल स्टेशन का सफ़र भी इसी किस्म का एक तजुर्बा था. मेरे सैर तफरी और सैर के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे वालिदैन ने मुझे ये खबर मेरी सालगिरह से 2 दिन पहले मुझे दी. उन्होंने कहा कि मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन गोरख हिल स्टेशन पे करेंगे. गोरख हिल स्टेशन जो कि 5,690 फीट ऊंचाई पे है और एक ऊंची पहाड़ी है और सैर तफरी के लिए अच्छी जगह है जो कि सिंध में है. मुझे उम्मीद है कि आप मेरा अकाउंट पढ़कर लुत्फ़अंदोज़ होंगे. पैराग्राफ 2. We started the journey at break of dawn in an air-conditioned bus. A group of 14 tourists welcomed us, and a glance made me realize that they were about 4 teenagers, which means that the trip was likely to be fun. I took a seat near the window, and our long-awaited trip started from Karachi. The guide explained the journey and the route we would be taking. He also distributed flyers that had details about the resort. After crossing the toll plaza on the motorway, I turned on my Wi-Fi
to search for the route to our final destination. I checked the route on my mobile, and the GPS, Geographic Positioning System, showed that the area that we were crossing was Nooriabad and that we had traveled 83 kilometers. Looking out of the window, I could see newly constructed housing schemes and smoke coming out from the factory chimneys. पैराग्राफ 2, हम सुबह सवेरे एयर कंडीशन बस में बैठे। हमारे साथ 14 सयाह टूरिस्ट भी मौजूद थे। मैंने एक झलक बस में देखा तो 4 टीनेजर्स मींस 9 उम्र भी थे। मैंने सोचा कि हमारा सफर अब बहुत मजेदार होगा। मैं खिड़की के करीब बैठा और हमारे बहुत देर से इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारा सफर कराची से शुरू हुआ। टूर गाइड ने हमें सफर के बारे में बताया। उसने हमें फ्लायर्स फ्लायर्स जो कि पैम्फलेट या हैंडआउट आप कहें वो भी दिए, जिसमें गोरख हिल स्टेशन रिजॉर्ट के बारे में मालूमात भी थी। मैंने भी टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद वाईफाई के जरिए रूट्स देखे। उससे मुझे मालूम हुआ कि हम नूरियाबाद क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी हमें 83 किलोमीटर्स का फासला तय करना है। खिड़की से मैंने बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स देखी और धुआं जो कि फैक्ट्रियों की चिमनी से निकल रहा था। पैराग्राफ 3, आफ्टर ट्रेवलिंग अ लिटिल मोर वी क्रूज्ड जामशोरो। ऑन माय राइट I could see some glimpses of the mighty Indus. Some fishermen were laying nets to catch fish for the day. On the mobile application, I could see that the city of Hyderabad was right across the river. The guide announced on the public address system that we would take a small detour and go to the Almanzar Hotel on Kotri Barrage for a quick cup of steaming hot tea and parathas. The barrage was a colossal bridge-like structure constructed over the mighty river. I quickly made friends during the break and was sure that the rest of my trip would be exciting. Paragraph 3, हमने जामशोरा क्रॉस किया, फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर देखा तो मालूम हुआ कि हैदराबाद करीब है। फिर टूर गाइड ने कहा कि अब हम अलमंजर होटल जाएंगे और जो कि कोटड़ी बराज पर है और हम वहीं पर चाय पियेंगे और पराठे भी खाएंगे। पैराग्राफ 4, on our next leg of the trip, we took the Indus Highway, which runs along the right bank of the river Indus. Cash crops are grown in this region. I could spot blocks as well as tractors being used for farming. The bus rumbled on, and soon the guide announced that we would be reaching Sevan in a while, where we would be breaking our journey for a quick visit to the shrine of Lal Shehbaz Qalandar, a highly revered Sufi saint. This visit was an incredible experience as people from all walks of life come to the saint's shrine to pay homage. It is commonly believed that a visit to this shrine can provide healing for all types of illnesses. The spiritual atmosphere, the aromatic fragrance of incense and red roses, and the colorful spreads took me to another world. पैराग्राफ 4, हम दरियाई सिंध से गुजरे और देखा कि कैश क्रॉप्स वहां उगाए जाते हैं। टूर गाइड ने कहा कि अब हम सेवन में थोड़ा रुकेंगे और वहां हजरत लाल शहबाज कलंदर की मज़ार पर हाजिरी देंगे। ये एक बहुत नाकाबिल यकीन तजर्बा था क्योंकि वहां पर जगह जगह से लोग आए हुए थे खराज अकीदत पेश करने। ये एक बात यकीनी जानी जाती है कि इन मुक़द्दस मज़ारात पर दिली सुकून मिलता है और वहाँ का माहौल रूहानियत भरा और फूलों की खुशबुओं ने मुझे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। पैराग्राफ 5, our final destination was, of course, the Gorakh Hills, which was a good 4 hours from Sevan. On leaving Sevan, we were served lunch in nicely packed lunch boxes on the bus. The lunch comprised spicy fish caught from the Manch Lake, which was situated close to Sevan. We washed it down with fresh, refreshing sugarcane juice supplied in disposable glasses. The tour operator had arranged the lunch from Sevan. पैराग्राफ 5, हमारी आखिरी मंजिल गोरख हिल स्टेशन थी जो कि 4 घंटे के फासले पे थी सेवन से। हमने वहीं लंच किया। पैराग्राफ 6, the guide and the driver warned us in advance that the comfort of the bus driver would soon be over. At the foot of the Gorakh Hills, we were transferred to a jeep for a steep uphill drive to reach the summit. The steep zigzag 4-kilometer ride made my mother
and a few elders sick, but we were well prepared to handle the problem. On reaching the peak, I felt that I was on top of the world, surrounded by steep slopes and rugged beauty. However, as luck would have it, all rooms were occupied and we had to rent tents for our night stay. My family fixed our tent on a small, flat piece of land overlooking Balochistan in the west. This location was a perfect vantage point for watching the sunset. पैराग्राफ 6। उसके बाद टूर गाइड ने हमें कहा कि अब ड्राइवर का काम खत्म हुआ। फिर हम जीप पर सवार हुए और 4 किलोमीटर फासले पर थे। हम सब तो वहीं बीमार हो गए थे, मगर हम पहले से तैयार थे। वहां हमें कमरे नहीं मिले क्योंकि बुक थे। आखिरकार हमें टेंट पर ही गुजारा करना पड़ा। वहां से हमने बुलंदी पर मगरिब की जानिब बलूचिस्तान का नज़ारा देखा। पैराग्राफ 7। After a light dinner, when I stepped out of the tent with a steaming cup of tea in my hand, I found myself under a canopy of stars under which we lit the bonfire. We were all in a very good mood and had great fun indulging in activities such as baitbazi, Chinese whisper, sharing funny stories, and all sorts of childish games that we could think of. The sparkling golden hues of the fire, the crackling of the wood, the bright stars above, and the warmth of friends gathered around the fire made time come to a stand still. पैराग्राफ 7। उसके बाद हमने डिनर किया, फिर चाय पी और फिर हमने बेतबाजी खेली। बेतबाजी मैंने आपको बताया था कि ये शायरी का मुकाबला होता है, वो किया। उसके बाद चाइनीज इस पर खेली और मज़ाहिया कहानियाँ, और उसके बाद बच्चों वाली बहुत सारी गेम्स भी हमने खेली। पैराग्राफ 8। Waking up early in the morning, I wasn't aware that the best was yet to come. As I stepped out, I witnessed a sunrise that was one that would witness in a painting or a movie, and the clouds were gradually descending all around us. It was spellbinding to see floating clouds, which I could touch, to smell the fragrances of different herbs, which tranquilized my senses, and to hear the distant bleating of sheep grazing around. I was still admiring the beauty when I heard people singing Happy Birthday behind me. Turning around, I saw that my parents and friends were carrying a huge cake with candles on it. Things had been planned to the last detail. A beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony. I was deeply touched by my parents' love and meticulous arrangements. The cake cutting was followed by halwa puri for all. However, all good things have to come to an end. Soon after breakfast, we packed our belongings and said goodbye to the most awe-inspiring holiday resort of Sindh. Paragraph 8. मैं सुबह सवेरे उठा, मुझे मालूम ही नहीं था कि वो खूबसूरत घड़ी आ गई है। मैं सूरज की किरणें देख रहा था और परिंदों की आवाज़ सुन रहा था। मैं हैरान हो गया कि पीछे से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे। मेरे वालिदैन और मेरे दोस्तों ने बड़ा केक रखा हुआ था और आखिरी लम्हों में सारी अरेंजमेंट्स की गई, कालीन बिछाया गया और केक कटिंग सेरेमनी हुई, और फिर हम सब ने हलवा पूरी खाई और नाश्ता किया। आखिरकार इसी तरह हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। उसके बाद हमने अपने सामान पैक किए और हमने गुड बाय कहा इस खूबसूरत हॉलीडे रिजॉर्ट को, जो कि सिंध में है। पैराग्राफ 9। On our way back, we took a different route and traveled from the Dadu Moro Bridge. The guide announced that from there we would cross the river Indus to go to the other bank to continue our journey. The landscape here was greener as compared to the right bank. On the way, we stopped at Hala to buy some souvenirs from roadside shops. We also glimpsed the historical city of Matiari in the distance. Earlier, the guide had announced that we were passing close to Bhitsha, where the shrine of one of the world's greatest poets, Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai Rahmatullah Alayh, is located. Finally, we crossed through the city of Hyderabad and reached the motorway on which we had traveled the day before from Karachi. Paragraph 9.
वापसी पे हम दादू मोरो पुल के रास्ते से गुजरते हुए हाला में रुके और वहीं दुकान से सोवीनियर खरीदे। टूर गाइड ने कहा कि हम बिरशाह से गुजरे जहां हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो की मज़ार है। फिर हम हैदराबाद से गुजरकर आखिरकार कराची पहुंच गए। पैराग्राफ 10। This journey gifted me with new friends, abundant excitement and fun. Overall, it was a once in a lifetime experience. How true was Ibn Battuta when he said that travel leaves you speechless and then turns you into a storyteller. Paragraph 10. इस सफर से मुझे नए दोस्त बनाने का मौका मिला और ये एक बार जिंदगी भर का तजर्बा था। इब्ने बतूता कितना सच्चा था। उसने कहा था, सफर आपको बेआवाज छोड़ देता है और फिर आपको कहानी सुनाने वाला बना देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 7.1 माय ट्रैवल डायरी, जो अभी हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस की, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1 to 8 आई विल एक्सप्लेन एंड सॉल्व। उम्मीद है ये 7.1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।